ओ नमो नमः। गीताभ्यासे 4-41 योग संन्यस्त कर्माणम, a study by S.L. Abhyankar. As mentioned earlier, in the three shlokaha 4-40, 4-41, 4-42, Sri Krishna Bhagavan calls Arjuna to give up his despondency, samshayaha. अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. We shall now study shloka 4-41. योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय. पदच्छेदै. योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम कर्माणि न निबद्धन्ति न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय. वाक्यांशशः विश्लेषणं. धनंजय, कर्माणि योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न निबध्नन्ति. धनंजय, संबुद्धौ एकवचनम्. कर्माणि योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न निबध्नन्ति. कर्माणि, कर्मन्, नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्. योगसंन्यस्त कर्माणं, योगसंन्यस्त कर्मन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनम्. योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन सह योग संन्यस्त कर्मा. संन्यस्तानि, सम प्लस नि प्लस अस, संन्यस धातोः क्त विशेषणं संन्यस्त. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. संन्यस चतुर्थगणीयः परस्मैपदी. टू प्लेस और पुट डाउन, डेपॉजिट. टू ले डाउन और to lay aside, give up, abandon. ज्ञान संचिन्न संशय. ज्ञान संचिन्न संशय विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं. ज्ञानेन संचिन्नाः संशयाः यस्य सः ज्ञान संचिन्न संशयः. संचिन्नाः, सं प्लस छिद्, संचिद् धातोः क्त विशेषणं संचिन्न. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. नोट. छिद्, छिदिर् द्वैधीकरणे. टू कट, टू ग्राइंड, टू ट्रंकेट, टू इंसाइज. रुधादि सप्तमगणीयः उभयपदी. सकर्मकः अनिट्. आत्मवन्तं, आत्मवत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं. आत्मवत् एडजेक्टिव्. अस्त्यर्थे मतुप्, मस्य वह. सेल्फ possessed, possessed of self restraint. Composed, prudent, wise. किम इव अवसादकरम आत्मवताम. Indeclinable also. Like oneself, आत्मवत्. आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः. निबध्नन्ति, निबन्ध धातोः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं. निबन्ध नवगणीयः परस्मैपदी. टू बाइंड, टू टाई, टू फासन, चेन, फेटर. आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय. रेफरेंस ऑफ दिस सेम श्लोक हैज बीन गिवन. धनंजय, धनंजय, कर्माणि योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न निबध्नन्ति. For summary translation of this, I have taken this from https://archive.org/details/Srimad Bhagavad Gita Rahasyam by B.G. Tilak, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, volumes 1 and 2, etc. O Dhananjaya, actions cannot bind the Atmajnani, self-realizer, who has cast off karma, that is the bondage of karma,
by taking shelter in the Karma Yoga and whose doubts have been annulled by means of Jnanam. छंदो विश्लेषण योग संन्यस्त कर्माणम अष्टाक्षराणि स्तकर्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ज्ञान संच्छिन्न संशयम् अष्टाक्षराणि न संश एतेषां मात्राः एका द्वे एका आत्मवन्तं न कर्माणि अष्टाक्षराणि न कर्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे निबद्धन्ति धनञ्जय अष्टाक्षराणि धनञ्जय एतेषां मात्राः एका द्वे एका अनुष्टुप् छन्दोऽयं स्वाध्यायः टिप्पण्यश्च नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी इन योग संन्यस्त कर्मा देयर इज संन्यस चतुर्थगणीय परस्मैपदी टू प्लेस और पुट डाउन deposit. There is a natural question where this has been answered earlier in मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि संन्यस्य. In this shloka, the phrase मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य is equivalent to yoga sannyasa karma. The phrase nirashi nirmamaha refers to a state equivalent to jnana sanchinna samshayam. There is also the word adhyatma chetasa, which is equivalent to atmavan. And the phrase yudhyasva vigata jvaraha can be considered equivalent to karmani nanibadhanti. All in all, it appears that the present shloka 4-41 and shloka 3-30 have identical import. Maybe the word yudhyasva in 3-30 is more forceful, whereas karmani nanibadhanti is philosophical. There is vigraha vakyam above jnanena sanchinnaha samshayaha yasya saha jnana sanchinna samshaya. There can be an alternative vigraha vakyam as sanchinnaha samshayaha yasya jnanasya saha jnana sanchinna samshaya. There has been mention of jnanagni. In jnanagni sarva karmani bhasmasat kurute tatha 4-37. Note, agni, vanhi, is prone to suffer from dhumena vriyate vanhi 3-38. Samshayaha are akin to dhumaha which clouds vanhi jnanagni. Sanchinnaha samshayaha jnanasya means jnanagni being cleansed of dhumaha which clouds. That validates the vigraha vakyam sanchinnaha samshayaha yasya jnanasya saha jnana sanchinna samshaya. He whose jnanam is cleansed of all the clouding, one who has unlearned all the wrong learnings, all misconceptions. The title Nama of this Chaturthodhyaya is Jnana Karma Sannyasa Yoga. Jnana Karma Sannyasa Yoga. This shloka begins with the words Yoga Sannyasya Karmanam Jnana. Yoga Sannyas Karma Jnana. In a way, this shloka is an explanation of the title Nama of this Chaturthodhyaya. Rather, this shloka is a summary of this Chaturthodhyaya. The word Jnana Karma Sannyasa Yoga makes an interesting study for deciphering this compound word. I think that the vigraha vakyam should be Jnanena Karmanam Sannyasah Saha Eva Yoga iti Jnana Karma Sannyasa Yoga. Here, Karmanam Sannyasah is not to be taken to mean renunciation of karmani, because it is jnanena karmanam sannyasa. It is something to be done jnanena, knowledgeably, appreciating and imbibing all the subtlety, with no doubts left, jnana sanchana samshaya. So, one does not forsake, one does not relinquish karmani, one does not do sannyasa of karmani. Rather, one relinquishes the thought, I do, I did. Obviously, one aspires to know fruits of actions also. That is what Jnanena Karmanam Sannyasa is. Inter Sahayava Yoga.
ज्ञान कर्म संन्यास होगा. The word Atmavan has to be translated, has been translated as Atmadhyani, self-realizer. I think self-realized is a better translation, Atmavan. The Sanskrit translation of Atmavan as Atmadhyani is good. The phrase Karmani na nibaddhanti means is freed of the bondage of Karmani, means is freed from the cycle of birth and death. In turn means is emancipated. Shubhamastu.